मुसहर बिरादरी जैसी आदिम जो जनजातियां हैं, उनको आदिम जनजाति का, अनुसूचित जाति का आज तक दर्जा नहीं मिलने से उन समुदायों में भारी रोष भी है। यहाँ तक कि कभी कभी हिंदी और अंग्रेजी के शब्दावली के आधार पर उनको आदिवासी समुदाय का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। गोंड और गोंड, लोहार एवं लोहरा, इस तरह के केवल शाब्दिक अर्थों पे थोड़े से अर्थों को भिन्न होने से उन लोगों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलने से बिहार में ऐसे समुदाय में भारी रोष है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के अभाव में अभी जब देश में सामाजिक आर्थिक जनगणना एक देर से शुरू हुआ और इसके अभाव के चलते हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस समुदाय का कितनी आबादी है और आबादी के अनुपात में जो मिलने का जो आरक्षण की जो सीमा है वो किस स्तर तक बढ़ना चाहिए, यह हमारे पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। इसीलिए सरकारों से, भारत की सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जातीय सामाजिक जनगणना को कार्य पूरा करेंगे, जिससे आने वाले समय में अब आरक्षण के प्रावधानों को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब देश में एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन जब प्रस्तावित है, एक मिनट मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। वन्य अधिकार अधिनियम 2006 पास होने के बावजूद भी इस इलाके के आदिवासी समुदायों में अभी तक वन उपज को लेकर के एक स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से बिहार के कई जो ऐसे जो इलाका हैं जो जनजाति रहते हैं, जनजाति समुदाय के, उन लोगों के इलाके में सड़क का व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पीने वाली पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जब उद्योग लगाने की बात होती है, खनन की बात होती है, तो उन इलाकों में भारत सरकार लगातार परमिशन देने का काम करती है। यह एक दो तरफा सरकार की जो नीति है, इसको बदलने की आवश्यकता है। चूँकि समय मेरा बहुत कम था, इसीलिए मैं इतनी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. The House stands adjourned to meet on Wednesday, 18th December 2024 at 11 a.m. हमारी जो एनडीए सरकार है, मोदी जी सरकार है, ये सरकार काम कर रही है। थैंक यू। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस पार्टी को जन्म दिया, रिपब्लिकन पार्टी, उसी पार्टी को मैं चला रहा हूं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए, संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसीलिए सभी लोगों के हमें साथ मिलनी चाहिए।
कांग्रेस वालों को भी साथ हमको मिलनी चाहिए। Honorable member, I'll have to move on. Please कांग्रेस conclude. आज अपोजिशन में है। Please conclude. 70 साल तक आप सत्ता में थे, लेकिन आपको विरोध। बहुत शुक्रिया honorable member. I have to conclude. Thank you. Thank you. इसीलिए Thank मैं you. ज्यादा वक्त नहीं लेना Thank you. चाहता बहुत हूं, शुक्रिया. लेकिन संविधान Thank you. I'll have to चर्चा हो रही conclude. है। Thank you. इस चर्चा में Thank you. सभी लोगों ने भाग लिया है। Thank you. Thank और you. हमारी सरकार, मोदी शुक्रिया. साहब की सरकार Honorable- संविधान को मजबूत करेगी। Honorable Shri Derek ऐसा O'Brien विश्वास ji. व्यक्त करता Next हूं। speaker, Honorable Shri Derek O'Brien ji. Thank you. Thank you. Thank you, honorable member. Honorable Shri Derek O'Brien ji, 10 minutes. Sir, every member of my party has taken one word from the preamble as a theme and spoken on it, on the Constitution. The Constitution is more than a book in a library. It is a living, breathing document on the streets of India. We've heard lots from 1940, 50, 60, 70, lots in the 40s and 50s, and good. History is always useful. But I wish to take you on the streets of this living, breathing document. And let me start with 1984. A young lawyer, a part-time milk booth attendant, a political activist in 1984, suddenly went to the United Nations within 1 year, 84-85. Why? Because this constitution gave that person the chance to be elected to the Loksabha. It was Rajiv Gandhi who gave her a ticket. Doesn't matter bank account, doesn't matter social status, but she got the ticket, and after that went and represented India at the United Nations. There are many light-hearted stories about how she took her murmura around because she still lives in that one-room home in Calcutta. That was 1984, and the Constitution made that happen for her. In 1997, again, the Constitution not in a library but on the streets. The Congress party, she felt, were too close to the CPIM. So they had a Bengal seminar, big seminar in Bengal of the Congress party. They had it inside a stadium. This lady had her own conference outside the stadium. 5,000 people came inside the stadium. 50,000 people came outside the stadium. This is the Constitution on the streets. There are about 40, 50 examples. I'll just give you one more. And that is fighting for farmers. All options had run out. So she went on a 26-day hunger strike. This is a woman who has sent people like me to Parliament. Next time you people here talk about women, listen to what this woman has to tell you. 1, Women's Reservation Bill. You brought it. When will women come into Parliament? 2034. My party, All India Trinamool Congress, out of our 43, 44 MPs, 38% already in Parliament. This is the kind of debates we should be having. Otherwise, screaming, shouting. Women in Parliament, what have you done? Last Lok Sabha was 14.5%. This Lok Sabha, you brought it down to 13.5%. Don't talk to us about women. I'm glad you took a good idea from a state like our health card, Swasthya Shati, and 2 years later you turned into Ayushman Bharat. Good. But the health card in Bengal is in the name of the woman of the house. And Lakshmi Bhandar, 1,200, 1,500 rupees to women. I welcome that the idea started by Mamata Banerjee in Bengal many years ago is now being copied by multiple states. Very good. But see your arrogance. On a day where we are debating the Constitution of India, your hubris makes you bring a bill on the Constitution there at 12 noon. Bring it, we will fight you, we will defeat you. On the one nation, and you're bringing this bill.
For heaven's sake, you cannot conduct one election in one state. You need 7 phases. I'll give you examples. You can't conduct one election in one constituency. You need 2 different days. Sir, it's been a 30-hour debate. 1,46,000 words in the Constitution. I want to talk about 3 important words which are not in the Constitution. Very important. And let's reflect. Federalism. Your view, you say cooperative federalism. Nonsense. Your view is PF, not Provident Fund. Political federalism. We don't like you, we can't defeat you. So what we'll do, we'll block Manrega funds. We'll block Awas Yojana funds. Doesn't matter, we brought our own funds to pay in Bengal. You will do this. Because double engine as a concept is unconstitutional. I want the treasury benches. We spend so much time on words, words, words. I want to pause for 10 seconds and give my 10 seconds for everyone there through you, sir, to introspect. Think about it. Federalism. Second word not mentioned in the Constitution, media. And we have all the respects for journalists, all of them. Not mentioned in the Constitution. I want to use this platform of Parliament to ask the 10 biggest media owners, you're watching this, I hope, the 10 biggest media owners. Don't give me examples of 1975 in the emergency, no. The 10 big media owners, you're billionaires. The next 7 seconds is for you, in silence. Reflect. Introspect. And the third word not mentioned in the Constitution, which is very important but not mentioned. The opposition, not mentioned in the Constitution. It's a very basic rule. The opposition must have its say. We don't have the numbers here. The government will have its way. It's as simple as that. So allow us to have our say. I'm happy that the Honorable Home Minister is here, because sometimes the opposition is not in Parliament. Let me give you 2 examples. One, unanimous resolution passed in the Bengal Assembly to fast-track a bill for the safety of women who are raped, the Aparajita bill. And the second example is to change the name of the state to Bangla. Where are these bills? Governor's office, deep freeze. After that, it comes to High Constitutional Office. I have no problem with the High Constitutional Office, not at all, because the High Constitutional Office will only act on the advice of Mr. Modi, Mr. Shah, the Home Minister, Cabinet. I want the High Constitutional Office or those advising on these issues of the opposition to reflect. Sir, reflection is difficult. Reflection has to be in silence. So don't hassle me when I'm speaking. Farm bills. What happened on the... I've got 30 examples of Parliament. I'll take one. 146 MPs were thrown out for another bill, criminal bills. There's an enabling act of the Nazis. They brought that in 1933. Read that, because that also gives you similarities. But come to the farm bills. What happened on the farm bills? The opposition objected. Why? Because we wanted voting on the bills. When the opposition objected, what happened? Everyone got suspended. The videos went out. Oh, opposition was dancing or moving around on the tables. My question is, when you brought repeal the farm bills, quietly sat down and you repealed the farm bills, why didn't you allow the opposition to debate that subject when you repealed those bills? Allow us. Sir, in all this, some of this explanation will not be understood, because there are parties like mine, led by Mamata Banerjee and the people of Bengal. You try and get us in Bengal, every time of 10 seats, you lose 3,
we win 8. So that's you're stuck with that. Sir, we will not allow this parliament to ever become an RSS Shakha. Never. We'll fight for it, sir. Sir, but I want to end on a celebratory note, on a happy note, because I've stayed only with the Constitution. And as I started, the Constitution is more than a book in the library. It is a living, breathing document on the streets. And I know these streets of Calcutta, of every district in Bengal. Sir, I'll end with a story. It's a reality. There's a Jewish bakery in Calcutta where a week away from Christmas, there must be about 4,000 or 5,000 Jews in India. The Jewish bakery makes delicious Christmas cake. All the 300 bakers in that Jewish bakery all belong to one community. They're all Muslim, each one of them. And starting with about a week before Christmas, there are long lines outside the bakery. And if you go and ask people those lines, they'll tell you, Bhaskar, Rima, Arjun, doesn't matter, they're all Indians, but they're in that line in that Jewish bakery. 80% Hindu. So I finished. Sir, 1 minute, 1 minute, 1 minute. And what are they celebrating? A Christian festival. Sir, I want to conclude by saying, come to Bengal, come at the end of March. Now you can come and celebrate Christmas. Come at the end of March to line up on Red Road and watch the Eid prayers, or mark the date, on the 30th of April, come to Digha to see the beautiful new Jagannath temple. Thank you, sir. Sri P.P. Sunil, 3 minutes. No, sir. No, reduce to 3 minutes. Honorable Chairman, sir. Previous speakers have highlighted the history of our Constitution and the challenges it faces today. Given the nature of the topic and listening to some of the speech from the Treasury bench, there is much to be said. Opening the discussion, Honorable the Finance Minister targeted the Soviet Union's model, forgetting their immense assistance for our country in terms of numerous infrastructure projects at the scale of the Bilai steel plant and their support to us during the 1971 war. It was a joint Indo-Soviet space program that sent the first Indian into space. Like this, there is much to call out and expose the lies spoken from the Treasury bench, but given the paucity of time, I rise to speak only on the reality behind the 11 resolutions given by Prime Minister in the Loksabha. While these resolutions may appear optimistic, they do not align with the reality of governance under the BJP. The first one, be it government or citizen, all must fulfill duties. While it is noble to call for duties, this comes from a government that has sidestepped its responsibilities, particularly in tackling unemployment and inflation. In our Constitution, duties follow behind rights, and rights of the peoples is a term the BJP has no value or. Then to Sabka Saath, Sabka Vikas. This slogan falls flat as Dalits, Adivasis and minorities, especially Muslims, continue to face discrimination. The government and BJP's action contradict this call for inclusive development. Third one, zero tolerance towards corruption. The BJP's call for zero tolerance is undermined by its own actions. The Treasury repeatedly obstructed discussions on corruption charges against a corporate house, and several alleged corporate individuals are now ruling party leaders. The fourth one, laws of nation, we should be proud of them. Selective enforcement of laws like UAPA target dissenters and activists. The recent suicide of an individual in Madhya Pradesh due to ED harassment raises serious questions about misuse of power and fairness of law enforcing authorities.
The fifth one, freedom from colonial hangover, pride in India's culture and heritage. While it is important to move beyond colonial legacies, the BJP's obsession is with distorting India's past to further its device agenda. Creating artificial enemies to divide the people does not help national progress. Freedom from dynasties in politics. The BJP's own dynastic nature is evident with several leaders holding power for decades. The PM should look to the left for lessons in political merit if he wants to pursue a political that look beyond dynasties. Samvidya Saman. The RSS early attacks on our constitution remain relevant. Their allegiance to Manusmriti over the constitution speaks volumes about their commitment to democratic principles. Don't take away reservations of those who need them. While the Prime Minister's statement is welcome, the BJP's policies, including privatization, have eroded opportunities for marginalized communities to benefit from reservations. Reservations can be safeguarded only when there is a strong public need. Last point, sir. Women-led development. Real women's empowerment requires more than rhetoric. CPI leader, Comrade Geeta Mukherjee, was the pioneer of the Women's Reservation Bill. The BJP has created obstacles from moral policing to the mistreatment of women wrestlers. The Prime Minister must act on his words by implementing the Women's Reservation Act immediately. In conclusion, these resolutions fail to address the true needs of our country. There is a growing gap between the government's promises and its action. True progress requires a commitment to equality, justice, secularism, and federalism as enshrined in our criticism. Thank you, sir. Sri Sana Satish Babu, 3 minutes. Thank you, Honorable Chairman, giving this opportunity to make the first speech about glorious journey of 75 years of the Constitution of India. I thank Sri Nara Chandrababu Naidu Garu for giving me this opportunity to be part of this House and a chance of speaking the Constitution. In this contest, I would like to remind this House and the people of India of the great Telugu people who contributed in the drafting of the Constitution of India. Sri Moturi Satyanarayana, Sri N. Gopal Krishna Swami Iyengar, Sri T.T. Krishnamachari, and Sri Thirumal Rao. As a member of Constitution Assembly representing the Madras Presidency, the great Telugu people played a significant role in drafting of Constitution. Andhra Pradesh has been pioneer in the implementation of Constitution and the subsequent amendments to it. The democratic process have been vibrant and spirit of the Constitution. Equality, justice have been upheld by the people of the Andhra Pradesh. I would like to bring notice of this House and the country that Andhra Pradesh has resolved through the Swarnandhra 2047 vision document formulated by Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu as the part of Viksit Bharat 2047 envisaged by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Education is the foundation of equality, and this government is ensuring no child is left behind. Through the record-breaking parent-teacher meeting on all government schools and mega DSC initiative for the 16,500 teacher posts, we empowering the future generations, laying the foundation of equal opportunities to all. In the just 5 months, this government has taken steps towards social justice, an investment of 18,000 crores in pensions to provide the support 64 lakh citizens, ensuring dignity and care of the most vulnerable among us. Maiden speech, sir. AP has introduced the transformative policies initiatives designed to ensure economic justice to creating the inclusive growth of opportunities across the various sectors, including AP Industrial Development Policy 4.0, AP MSME Policy, AP Food Processing Policy, AP Electronics Policy, AP Integrated Clean Energy Policy. The spirit of unity of Restonists, the 1,500 crores of central financial assistance for the development of new capital Amaravati, the testament of the nation standing with Andhra Pradesh. 1 minute, sir.
the member belonged to the opposition party, YSR Sapi party, commented yesterday about constitution in Andhra Pradesh. He commented very social media workers and all the things, but their party workers commented in social media against women. That's unconstitutional. But the party person is commented very wrongly. And the member belongs to party has falsely arrested 3 term serving chief minister at the age of 74 without evidence. Thank you. By the misusing the Shri state machinery. B.D. Mastan Rao Yadav. 3 minutes. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the solemn occasion. I am delighted to stand in this August House to speak on our great Constitution on the occasion of its 75 years of adoption. But for the visionaries like Mahatma Gandhi, Dr. Baba Sahib Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel ji, and Bhogaraj Sitaramaya, Maulana Abdul Kalam Azadi ji, etc., a person like me could not have entered the portals of this temple of democracy. These leaders provided the language and the substance of India's unity in diversity, and the ideals enshrined in the preamble: justice, liberty, equity, and fraternity. I pay homage to all those who provide us the greatest constitution for India. Hamara Samvidhan, Hamara Samman, a campaign is launched by Her Excellency Honorable President of India, aims to deepen citizens' understanding of the Constitution in spite of cultural barriers, language divide, historical tensions, regionalism, and social economic disparities. As our Prime Minister Sri Narendra Modi ji said, India is strong because of its diversity. We are proud that our Constitution, framed by our founding fathers, is standing as solid rock over the last 75 years. And it is the responsibility of all of us to stand united for the integrity and prosperity of all Indians, so that India will be a developed nation, Vikasit Bharat, by 2047. On this occasion, it is to submit few critical aspects of the need for inclusivity of OBCs in the development of our country. Though, as per our Constitution, all are maybe equal before law, but I have no hesitation to mention that all are not equal in getting the fruits of freedom and envisaged by our founding fathers of the Constitution. While representation of weaker sections in public services, especially for OBCs, has been improving, though at nail space. Thanks to the reservations after the belated and partial implementation of Mandal Commission's recommendation, their share in the wealth of the nation is small and disproportionately low. We are proud that Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, a OBC leader, is leading the nation successfully over the past 11 years and keeping the Indian flag high in the international platforms. I hope that Honorable Prime Minister ji will focus on the development of OBCs in all walks, and especially in the field of industry, trade and business, and help the OBCs grow on par with others. This will be possible, 1 minute, sir. This will be possible if all the recommendations of the Mandal Commission are implemented within fixed frame time. In this regard, I also humbly implore the Honorable Prime Minister to create separate ministry for the welfare and development of the OBCs, so that there will be a special focus on the overall development of the OBCs in this country. I thank the chair and my leader. You made your point. Sri R. Girirajan. 3 minutes. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me the opportunity to participate in the special discussion to mark the choral jubilee of the adoption of the Constitution by the Constituent Assembly. Sir, Constitution is the mother of all other laws of the country. Every law enacted by the government has to be in the conformity with the Constitution. Unfortunately, most of the bills brought and passed by this government from 2014 are against the guiding principles of the very own Constitution. Sir, the BJP leaders are accusing the Congress
for indiscriminate use of Article 356 to topple states' government in the past. But what BJP is doing is different technique, poaching and purchasing the MLAs to topple the duly elected governments. It is unfortunate that BJP is resorting to undemocratic means to topple state governments which are ruled by the opposition parties. Sir, people will not forget what they did in Karnataka or Madhya Pradesh, what they did in Maharashtra, Goa and Arunachal Pradesh to topple government. Sir, the governors are being used as a BJP state presidents in all the opposition-ruled states. The BJP appointed governors interfere in the affairs of the duly elected government and not responding the cabinet decision and the bills passed by the assembly of the duly elected government is unconstitutional. The governors acting as super chief ministers in the opposition-ruled states like Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Kerala, West Bengal, Punjab and Delhi is untenable and unwarranted. Sir, the injustice caused by BJP government to ruin the aspirations of the states and to promote their regional language is unconstitutional. And misuse of power, their penchant for the imposition of Hindi on non-Hindi speaking people is nothing but the linguistic terrorism. Sir, the government should declare all the regional languages as the official language of the state and allow them to practice in respective high courts as official languages. Sir, Manilatil Suyachi, Madhyil Kutachi, which means autonomy to the state, federalism at the center, வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது என்று நாங்கள் சொல்லிய காலம் உண்டு. ஆனால் உண்மையும் கூட, ஆனால் பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர், தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் ஆகிய முப்பெரும் தலைவர்களின் சீரிய வழிகாட்டுதலில் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பயனாக அபரிதமாக வரும் வருவாய் எல்லாம் வடக்கு எடுத்துக்கொண்டு உழைத்து பிழைக்க வழி தேடி வருவோரெல்லாம் வாழ்வாங்கு வாழ வந்தாரை வாழ வைக்கும் எங்கள் தமிழ்நாடு இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி செய்த வளர்ச்சி காரணமாக வருவாய் ஈட்டுவதில் முன்னணி மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. சார், only 1 second, sir. The Constitution of India is our holy book. Must be ensured the fundamental rights and core values enshrined and maintained undisturbed and reversed. The current ruling dispensation as preamble of the Constitution is stumbling block to fulfill their Hindu Rashtra and dream and we will forever stand as the most powerful, unbreakable. Shri R. Dharma, 3 minutes. சார், தேங்க்யூ சார். சமூக நீதி என்பது திராவிட இயக்கத்தின் உயிர் மூச்சு. எங்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உருவாக்கிய தமிழக மக்களின் என்றும் மனதில் நினைந்திருக்கின்ற புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் 69% இடஒதுக்கீடை தந்தார்கள். இதே தெய்வம் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் 9வது அட்டவணையில் இடம்பெற வைத்து 69% இடஒதுக்கீடை ஏற்படுத்தி தந்தார்கள். 1993 தமிழக சட்டசபையில் தமிழ்நாடு இடஒதுக்கீடு 69% இடஒதுக்கீடு சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. சமூக நீதி கொள்கையை தொடர்ந்து புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் செயல்படுத்த மேற்கொண்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் ஆகும். குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட போராட்டம் மத்திய அரசு சமரசம் செய்து அளித்தது. இந்திய குடியரசுத் தலைவர் சங்கர் தயாள் சர்மா அவர்கள் 1 மாதத்திற்குள் இந்த மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தார்கள். மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் ஏழை மக்களின் நலனில் அம்மாவின் திட்டங்கள் முக்கிய பங்காற்றியன. அவர்கள் அம்மா உணவகம், இலவச கல்வி திட்டங்கள் போன்ற திட்டங்கள் இன்று மக்களுடைய நிலையாக இருக்கின்றது. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை தாழ்விலிருந்து மேலே உயர்த்த வேண்டும் என்ற உறுதியில் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். அவரது தைரியத்தாலும் கண்ணியத்தாலும் தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதிக்கான அடிப்படை சின்னமாக மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் திகழ்கின்றார்கள். சமூக நீதியும் சமத்துவமும் தமிழ்நாட்டின் அடையாளமாக இருப்பதற்கு இதை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களே என்று பதிவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ சார். Shri Kartikeya Sharma. Shri Kartikeya Sharma. And after Kartikeya Sharma. Thank you, Chairman, sir. Sir, giving me an opportunity to speak on the historic occasion and a rare privilege
Today, when we celebrate 75 years of the Indian Constitution, we commemorate not just a legal document, but the very spirit of India, our hopes, dreams, and aspirations. Our Constitution is a living testimony of the vision of our forefathers and sacrifice of our people, the resilience of our democracy. Sir, it has weathered many challenges, including deliberate attempts to undermine its foundation, yet stood firm as the bedrock of justice, liberty, equality, and fraternity. Sir, Dr. Ambedkar emphasized that the Constitution must reflect the needs of the people and evolve with time. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, fraternity as the principles of life. Sir, Dr. Ambedkar warned the Assembly on 26 January 1950. He said, "We are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, but in our social and economic life, we will have inequality. How long shall we live this life of contradictions?" Sir, today, sir, when we stand, I, as an independent member, want to appeal to the government and the opposition that we should take this opportunity and must compliment and congratulate our forefathers for having envisaged such a beautiful constitution which has seen it through in the last journey along its way in the last 75 years. And I'm reminded of a quote by the then Prime Minister of England, who said, "Power will go to the hands of rascals, rogues, and freebooters. Indian leaders will be of low caliber and men of straw." So today, when we have completed 75 years and our economy has become the 5th largest economy, on the way to becoming the 3rd largest economy in the world, it is a befitting reply to those who thought that the Constitution will not befit Indians as a country and our caliber was undermined. So democracy is an evolutionary process. There's no finite point in democracy. We strive towards an optimum form of democracy, and the Constitution is a guiding force for that. And that is what the Constitution has given us. It has guided us through the tough times, through the times where it has been put to test, in the challenging times from 1975 to 77, under the Congress government, which curtailed freedoms, suspended fundamental rights, and misused constitutional provisions. However, the people inspired by Constitution, promise of liberty, did overthrow the authoritarian government in 1977. Sir, there have been umpteen instances. I have very limited time. But, sir, I would just say that the underlying principle of the Constitution has been to protect the vulnerable sections of society, whether they are scheduled tribes, Dalits, or the economically weaker sections, and it goes to the extent that there should be positive discrimination also, if required, and especially in the case of women. I want to thank the government that by bringing the Women's Reservation Bill, they have taken the Constitution provision and positively discriminated against women by making them an integral part of our democratic process. Sir, many opposition members and my friends have spoken about bulldozers. They spoke yesterday, a very senior member. I want to remind them that in 1976, it was the then Congress party which started the culture of bulldozers under the Sanjay Gandhi regime of Turkman Gate. There was spoke of one nation, one election. Sir, as if there's some sort of a ploy to destabilize the election process. So for 15 years, from 1952 to 67, including the time when our forefathers had started, that was the norm. Until it only happened that subsequently when the Congress regime decided to change that apple cart. Sir, we've had more than 400 elections since 1952 till now, sir. Out of which 200 elections took place in the decade of 70s and 80s, which was the most unstable political period in our country and costed us very dearly, because this was the time where economically we fell behind countries like China and were not able to come out of it. Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this historic event. I wish that we in unison can appreciate the Constitution and celebrate it. Thank you very much. Honorable Home Minister. सम्मान्य सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार का भाव प्रकट करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया है। महोदय, ये चर्चा जो है, ये चर्चा
एक और तो हमारे संविधान के कारण हमारा देश इतना कितना आगे बढ़ा, इसका जनता को एहसास कराएगी। दूसरी ओर हमारे संविधान की मूल भावनाओं के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र के मूल पाताल तक गहरे गए हैं, इसका भी एहसास होता है। और तीसरी ओर ये भी मालूम पड़ता है, जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार कर कोई अपने लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है, तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इस सभी दृष्टि से देखें तो संविधान की दोनों सदन में जो चर्चा हुई है, वो चर्चा एक प्रकार से हमारे किशोरों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आने वाले दिनों में ये दोनों महान सदन में बैठकर देश का भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए बहुत शिक्षणात्मक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और देश की जनता के लिए भी क्षीण करने में बहुत मदद करेगी कि किस पार्टी ने आज जो 75 साल की मीमांसा होगी, इसमें स्पष्ट हो जाएगा किस पार्टी ने जब जब जनता ने शासन अपने वो पार्टी के हाथ में दिया, संविधान का सम्मान किया है या नहीं किया है। मान्यवर, बहुत लंबी आजादी की लड़ाई के बाद हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए तब दुनिया भर के कई राजनीतिक पंडितों ने कई आगाहियां की थी कि ये देश बिखर जाएगा, शायद बन ही नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने ऐसी आगाही की थी कि यहां डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रस्तापित हो ही नहीं पड़ सकते, एकता हो ही नहीं सकती और ये देश आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। और आज जब 75 साल के समय के बाद संविधान को स्वीकार करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सरदार पटेल का मैं अब धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरदार साहब के अथक परिश्रम के कारण आज देश एक होकर मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा। मान्यवर, जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए, हमारे साथ भी पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। और मान्यवर, जो कहते थे कि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, उनको भी हमारी जनता ने, हमारे संविधान की खूबसूरती ने जवाब दिया है। हम आज दुनिया का 5वां अर्थतंत्र बनकर सम्मान के साथ, और ब्रिटेन जिन्होंने सालों तक हम पर राज किया, और ये जो मैंने तीनों आगाही कही वहीं से पक्ष विपक्ष में से आई थी, आज ब्रिटेन भी अर्थतंत्र की तालिका में हमारे पीछे खड़ा है। मान्यवर, ये हम सब के लिए गौरव लेने का पल है, हम सब के लिए बोध लेने का भी पल है और हम सब के लिए संकल्प लेने का भी पल है। और ये सदन जे आपने लगभग 80 से ज्यादा सांसदों को मान्यवर बोलने का मौका दिया, 31 घंटे की चर्चा हुई और ये चर्चा में सभी भाव पक्ष या विपक्ष से कहीं न कहीं प्रकट हुए। मान्यवर, आज मैं जब यहाँ आया हूं तब ये बात कहना चाहता हूं कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस मुकाम पर महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी सच होती दिखाई पड़ती है कि भारत माता अपने दैदीप्यमान ओजस्वी स्वरूप से
जब खड़ी होगी तब दुनिया की आंखें चकाचौंध हो जाएगी और पूरी दुनिया वो रोशनी से भारत की ओर देखेगा। वो दिन सच होगा, इसके नजदीक काफी मजल हमने काट ली है। मान्यवर, हमारा संविधान सभा की रचना और संविधान की रचना की प्रक्रिया, ये तीनों एक प्रकार से समग्र विश्व के सभी संविधानों में अनूठे हैं, अलग प्रकार के रहे हैं। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तृत लिखित संविधान चर्चा के सभी हमारे पारंपरिक लक्षणों को पार करते हुए हमने किया। इस संविधान सभा में 299 सदस्य रहे, 22 धर्म जाति समुदाय के सदस्य रहे, हर प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व रहा, हर राज्य का प्रतिनिधित्व रहा। एक प्रकार से समावेशी प्रतिनिधित्व के साथ भारत का भविष्य तय करना, मतलब संविधान को रचने की हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक अहर्निश चर्चा चलती रही, विस्तृत चर्चा चलती रही। देश के भविष्य, देश चलाने के नियम और देश की परंपरा को समाहित करते हुए देश को आगे ले जाने का संकल्प इतनी विस्तृत चर्चा के बाद बना। 13 समितियों में कार्यविभाजन किया गया, 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति बनी और जनता के अभिप्राय के लिए भी शायद ही दुनिया का कोई ऐसा संविधान होगा जिसका ड्राफ्ट पूरी जनता को कमेंट्स के लिए दिया गया और कमेंट्स पर भी बहुत डिटेल चर्चा कर उचित बदलाव भी किए गए। इतनी लोकतांत्रिक परंपरा से और प्रक्रिया से बना हुआ हमारा संविधान 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बटा है। और ये सभी संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं, वो विश्व में कोई भी संविधान से ज्यादा उदात्त और उत्तुंग मानव मूल्यों का सृजन करने वाले रहे हैं। मान्यवर, इसलिए हम सबको इस पर गर्व है और हम सब ये संविधान को हमेशा मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा मान्यवर, नंदलाल बोस जो गुरुवर टैगोर के अंतेवासी थे, बहुत बड़े कलाकार थे। इन्होंने 4 वर्ष का समय लेकर संविधान को सजाने का काम किया और उन्होंने जो संविधान लिखा गया था इसके अनुरूप घटनाओं को संविधान के अंदर उकेरने का भी काम किया। इतिहास, धर्म, संस्कृति और परंपरा, सबसे मानव जीवन के उच्च मूल्य देने वाली सभी संदेशों को, घटनाओं को उन्होंने चित्र रूप में यहाँ पर उकेरा। यहाँ पर भगवान राम का चित्र भी मिलेगा, बुद्ध और महावीर का भी मिलेगा, दशम पिता गोविंद सिंह जी का भी चित्र मिलेगा। गुरुकुल, हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसका संदेश भी मिलता है। राम, सीता, लक्ष्मण वो एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते वक्त दिखाए गए। भगवत गीता के संदेश का चित्र भी दिया। शिवाजी और लक्ष्मीबाई को भी यहाँ पर स्थान देकर देशभक्ति के उत्तुंग पाठ हमें पढ़ाए। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का हमें स्मरण कराती है और नटराज जीवन में बैलेंस कैसे होना चाहिए, वो बैलेंस के सिद्धांत को भी प्रतिरूपित करता है। मैंने आज थोड़ा यहाँ आने से पहले क्या क्या चर्चा हुई राज्यसभा में, उसमें हमारे एक सम्मानीय सदस्य ने कहा कि चर्चा का स्तर कितना नीचा हो गया है कि यहाँ चित्रों की चर्चा हो रही है। मान्यवर, अगर संदेश लेना नहीं आता तो संविधान का भी कोई उपयोग नहीं। ये सारे जो चित्र लगाए हैं वो हमारे हजारों साल से चलने वाले हमारे राष्ट्र के जीवन को उद्घोषित करने वाले। और कोई ये न समझे कि हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल है। हाँ, हमने हर संविधान का अभ्यास जरूर किया है,
क्योंकि हमारे यहाँ तो ऋग्वेद में कहा गया हर कोने से हमें अच्छाई प्राप्त हो, शुभ विचार प्राप्त हो और शुभ विचार को स्वीकारने के लिए मेरा मन खुला हो। मान्यवर, हमने सबसे अच्छा लिया है मगर हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई देती। और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है, उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है। चित्र बगैर का संविधान अधूरा संविधान। मान्यवर, इसके अंदर संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने, डॉक्टर BR आम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान काजू, KT शाह, आयंगर, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, KM मुंशी, ऐसे विद्वानों ने अनेक चर्चाओं में हिस्सा लेकर संविधान को समृद्ध और संपूर्ण बनाने का काम किया। परंतु इतना ही नहीं, संविधान सभा के जो सदस्य थे, इसके अलावे भी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक महाराज, वीर सावरकर, लाला लजपत राय और राष्ट्र, लोकतंत्र और हमारी परंपराओं में उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाले हर महापुरुष की भावनाओं का ये महापुरुष ने उल्लेख कर कोई न कोई सिद्धांत को प्रस्तापित किया है। मान्यवर, जब इतने सारे मनुष्यों का अच्छा विचार जिस संविधान में हो, उसको सफल होना ही था। ये संविधान सफल होने के लिए संविधान सभा की चर्चा अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वेद, उपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शांति पर्व, रामायण और महाभारत, इसमें से निपजे हुए मानव जीवन के सभी मूल्यों को भी इसके अंदर हमने समाने का प्रयास किया था। मान्यवर, 75 साल हो गए संविधान को किस प्रकार से हमारे राजनीतिक दलों ने और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ हमारी सरकारों ने भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया, इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं मानता हूं ये चर्चा समय उचित होगी। हमारे संविधान की रचना के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर एक वाक्य किया था। मैं आम्बेडकर जी के वाक्य को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोट, कोई संविधान कितना भी अच्छा हो वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोग पर उसको चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हो। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो वो अच्छा साबित हो सकता है अगर उससे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो। ये दोनों घटनाएं मान्यवर हमने हमारे संविधान के 75 साल के कालखंड के अंदर देखी है और मैं तथ्यों के आधार पर सदन के सामने और सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूं। हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया। समय के साथ साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन इस जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का।
भाजपा ने 16 साल राज किया मान्यवर। 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। दोनों प्रमुख दलों के 4 संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी, और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया मान्यवर? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। आप बता चुके। अब मान्यवर No, sit down. Jairam ji, he not yielding. He not yielding. We heard leader of the opposition. मान्यवर, Unless there is yielding, let us hear. मान्यवर, मेरा लंबा अनुभव है आजकल करते हुए। मुझे 30 साल हो गए विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए। संसद में भाषण करने का मेरा अनुभव है मान्यवर। वो विरोध तभी कर सकते हैं जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो बताए वो संविधान संशोधन नंबर 1, अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी मान्यवर, सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया मान्यवर,